today we'll be covering current affairs for the second week of December. So without wasting any time, let's just directly get into it. The first topic of our week is Hampi Stone Chariot in Vithala Temple. तो अभी क्या हुआ है that tourists can no longer get too close to the iconic stone chariot in front of Vijayanagar Temple. Vijayanagar Temple, which is a Dravidian style temple dedicated to Lord Vishnu. तो अभी क्यों नहीं ज़्यादा पास जा सकते? Because ASI, that is Archaeological Survey of India, जो यहाँ लिखा हुआ है, Archaeological Survey of India has put up the barrier aimed at preventing people from touching or climbing the monument, causing damage in any way to the monument. Right? So now tourists can only see and do photography of the monument from a distance. ठीक है, तो पास अब नहीं जा सकते हैं. So that was all about the current aspect of this temple, of this topic. Moving on to the next one, moving on to the Hampi stone. So Hampi chariot is one of the three famous stone chariots in India. The other two are एक कोणार्क है, कोणार्क में है, ओडिशा में, and the second one is in Mahabalipuram, Tamil Nadu. ठीक है. Now talking about one of the important topics of this one, which is Hampi, जो is one of the favorite topic of UPSC. ठीक है. This might be a question in your exam. So Hampi was the capital of Vijayanagar Empire, and Vijayanagar Empire, trust me, is the dearest topic of UPSC. Every now and then they keep asking questions from here. Hence, it becomes all the more important for us to read about it, right? So Vijayanagar Empire basically was established in 1336 by the brothers Harihara I and Bukkarai I of Sangam dynasty, right? ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? एट Tungabhadra basin in central Karnataka. So Tungabhadra is a river in southern India that flows through state of Karnataka to Andhra Pradesh, and it is formed by the confluence of two rivers, the Tunga river and the Bhadra river, right? And it is also classified as a World Heritage Site by UNESCO, and not just the World Heritage Site, but also the world's largest open air museum. Okay. So as you can see here in this photo कि यहाँ पर ये rings बना दिए गए हैं so as to prevent it from any kind of damage, right? So that was all about this topic. Next up we have United Nations Investment Promotion Award. ठीक है, तो Invest India is the agency जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, जिसने अभी रिसेंटली ये अवार्ड जीता है. ठीक है, सो अ बॉडी कॉल्ड UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हैज डिक्लेयर्ड इन्वेस्ट इंडिया, right? What? Invest India as the winner of United Nation Investment Promotion Award, right? और ये आपको ये याद रखना है about this, the name of this organization, Invest India, and of course about the UNCTAD कि किसने ये award दिया, United Nation Conference on Trade and Development. So more about this award. This award recognizes the best practices of investment promotion agencies across the globe. Around 180 countries इसमें participate करती हैं. So around 180 countries were the contenders for this award, but India, due to her good investment model, has been declared the winner. So this is a big achievement for us. This is a big achievement for India, right? Now the question is कि what were those practices and what was that model that we implemented जिसकी वजह से Invest India got this recognition. Okay, तो सबसे पहला is, the first one is business immunity platform. What it does, it helps the businesses and investors get real-time update on India's active response to COVID-19. And apart from this, एक तो ये हमारा प्रोग्राम था जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, which got recognition at a global level. And apart from this, it also created a team called COVID response team, so that जिनका भी business hamper हुआ है during इस pandemic के time पे could be taken back on the track. Now talking about the body called UNCTAD, it's a permanent intergovernmental body established by United Nations General Assembly, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. और इसका ऑफ कोर्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन एम यही है टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नेक्स्ट अप वी हैव लैब ग्रो मीट. ठीक है, तो रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबली, न्यू डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस ग्लोबली, दैट इज सिंगापुर फूड एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ अ लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट.
Okay, this is the first time cultured meat. This is the first time when this is happening. Okay, the cultured meat has been cleared for sale anywhere in the world. Okay, the lab grown meat, जिसको हम cultured meat भी बोलते हैं, is a meat produced by in vitro cell culture of animal cells instead of from slaughtered animals. In vitro क्या होता है? एक ये process होता है. In vitro studies are conducted using components of an organism that have been isolated from their usual biological surroundings. ठीक है, इसको हम टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं. सो बेसिकली जब हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके यूजुअल बायोलॉजिकल सराउंडिंग से निकाल के लैब में ग्रो करते हैं, उसको हम इन विट्रो कल्चर या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो प्रोसेस कहते हैं बेसिकली. ठीक है, having discussed all of this, now let us know as to what are the advantages of this and why are we doing this. तो इसके काफ़ी सारे advantages है, starting from the climate to the public health. तो 95% जो है ये लैंड यूज़ को कम करेगा, क्लाइमेट एमिशंस को भी ये रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा, न्यूट्रन पोल्यूशन को भी ये डिक्रीज़ करने में हेल्प करेगा. एंड सिंस यहाँ पर कंटामिनेशन के रिस्क बहुत कम होंगे तो ये पब्लिक हेल्थ को भी इन्हांस करेगा. Okay, so that was all about. You need to remember the name, the Singapore Food Agency. So this is the first agency. आपको ये नाम याद रखना है. That was all about this particular news. Next up we have Urban Quality of Life Index. तो recently IIT Bombay came up with the Urban Quality of Life Index. ठीक है, ये index quality of life को compare करता है Indian cities में, and to rank the cities we see the quality of, we see these things. We see the quality of water, we see the quality of power, electricity, literacy rate, employment, ठीक है, etc etc. अभी इस पर ही जो एक यूनिक चीज़ हुई है is that for the first time gender parity has also been included in the list, right? Talking about the findings, this is the chart for you. Just go through this chart once. I'll just read out the findings for you all. So Mumbai has topped the index, followed by Delhi. और gender parity की अगर हम बात करें तो चेन्नई is the most woman friendly city and Patna is the least. अगर हम if we talk about the another city, तो जयपुर has the highest crime rate against women and Chennai recorded the lowest crime rate against women. Literacy rate की अगर हम बात करें, so the gap in literacy rate between men and women is the widest in Jaipur and lowest in Kolkata. If we talk about unemployment level for women in Patna is higher than other cities. Right, so these are the findings. इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि IIT Bombay came up with this, and of course you can remember कुछ major cities के नाम, like for example you can remember this मुंबई की, मुंबई ने इसमें टॉप किया है, और ये एक दो चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हो. That was all about this topic. Next up we have the Cancer Genome Atlas 2020 conference. So recently there was an inauguration of second Cancer Genome Atlas, which was inaugurated by Ministry of Science and Technology. अभी ये क्या है और इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ये एक बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करने का इसका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट? of what? Of molecular profiles of all the cancers prevalent in Indian population to better understand the underlying factors patient by patient. तो क्या करना है? इसको बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सारे प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं, सारे कलेक्ट करके रखने हैं ताकि हर एक पेशेंट को अच्छे से स्टडी किया जा सके. नाउ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो पहला है इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट. इट्स बेसिक एम, what is its basic aim? तो its basic aim is कि एक जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? सो व्हाट वी डू इन जीनोम सीक्वेंसिंग, वी डिटरमाइन द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम एट अ सिंगल टाइम. ठीक है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग में हम करते हैं. मूविंग ऑन टू द पैन कैंसर एनालिसिस ऑफ होल जीनोम. अब ये क्या होता है? तो इसमें ये जीन मैपिंग करते हैं एंड दे सी इफ अ नॉर्मल जीन इज डिपार्चरिंग फ्रॉम इट्स यूजुअल बिहेवियर, कि एक नॉर्मल जीन में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, उस चीज़ को ये मैप करते हैं. ठीक है, कोई भी तरह की अगर कोई भी इफ एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन इज टेकिंग प्लेस, सो दे मैप the mutation, the changes, which mutation definitely can lead to cancer. So they basically map the changes, right? That was all about this topic. Next up we have
GI टैग्स की अब हम बात कर लेते हैं, जो भी न्यूज़ में था। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि उनके 5 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल जाए. सो बिफोर वी रीड अबाउट दोज 5 प्रोडक्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट GI टैग्स. ओके, GI, that is geographical indication, is the name. What is it? It's a name or a sign used on products which corresponds to a specific geographical location, right? It could be a town, it could be a region, or a country for that matter. All right. GI tag basically acts as a certification that the product possesses certain qualities and is made according to traditional methods. तो ये GI tag के बारे में थोड़ा मैंने बताया. Now the 5 products जिनके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि इनको GI टैग मिल जाए. द फर्स्ट वन इज कारसोंग कुल. इज अ ग्राम विच इज रिच इन अमीनो एसिड्स. ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ये खारिफ क्रॉप है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पांगी की थंगी. इट इज, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, हिमाचल पीपल नोज इट बेटर. सो इट्स अ हेजलनट. ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स स्वीटनेस. नेक्स्ट अप वी हैव चंबा मेटल क्राफ्ट्स. तो ये मेटल आइडल्स या फिर ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं. चंबा चुक, ये एक चटनी है विच इज़ मेड ऑफ ग्रीन एंड रेड चिलीज. ठीक है, भरमरी राजमा. It's a rajma which is rich in protein. I'm again sorry for the pronunciation if I'm pronouncing any of it wrong. तो ये 5 इसके प्रोडक्ट्स हैं. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली द नेम्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट GI टैग को समझना, GI टैग है क्या, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आई गेस या दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नेक्स्ट अप वी हैव यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, CND. ठीक है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, CND ने क्या किया है, दैट दे हैव रिमूव्ड कैनबिस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस और उसको लीस्ट डेंजरस सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल दिया है. ठीक है, पहले कैनबिस को Schedule 4 में डाला हुआ था. ठीक है, बट नाउ दैट CND हैज़ वोटेड टू रिमूव द कैनबिस एंड कैनबिस रीजन फ्रॉम Schedule 4 और Schedule 1 में उसको डाल दिया है. ठीक है, now let us read about cannabis. ठीक है, cannabis होता क्या है? Cannabis is basically a generic term. Generic term मतलब इसके अलग से species भी होते हैं जिसको हम there are many types actually. Cannabis sativa होता है, Cannabis indica होता है. तो cannabis हम generally एक generic term की तरह use करते हैं. It is a psycho active plant you can say. ठीक है, इसका मेक्सिकन नाम marijuana भी है. ठीक है, हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर पढ़ने की कि इंडिया में इसके लिए क्या एक्ट्स हैं या क्या लॉज हैं. सो इन इंडिया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज NDPS एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग ये इलीगल है. तो हमारे इंडिया में इसका स्टेटस क्या है? इलीगल है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग हियर, that NDPS does not apply to the leaves and seeds of cannabis plant. I'll repeat it again. NDPS does not apply to the leaves and seeds of the cannabis plant. So, अगर आप if the CBD is extracted from leaves of cannabis, then technically it is not illegal, right? Cannabis में basically 2 active substances होते हैं. The first is cannabidiol, जिसको हम CBD भी बोलते हैं. Second one is delta 9 tetrahydrocannabinol. ठीक है, तो ये 2 active substances होते हैं. So it was about this act, NDPS act. ये हमारे लिए important था. There are 2 more acts related to this. The first one is Commission on Narcotic Drugs. ठीक है, जो CND की जो हम बात कर रहे हैं, ये बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है. ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर इज़ इन वियना, ऑस्ट्रिया. इसका बेसिक क्या काम होता है कि ये सब्सटेंसेस को स्केड्यूल में असाइन करती है कि कौन से सब्सटेंस को कौन से स्केड्यूल में डालना है. दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा जो यहाँ पर जो एक्ट है, दैट इज़ सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है. ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो आपको यहाँ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि कैनबिस को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम Schedule 4 और अभी लीस्ट डेंजरस की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है. ठीक है, NDPS एक्ट के बारे में आप याद रख सकते हो बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर कंट्री, राइट? एंड little information about cannabis. That is all you need to remember regarding this topic. Next up we have CIPRI report.
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल आर्म्स मार्केट। तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वी मस्ट रिमेंबर दैट हु रिलीजेस देम। सो द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज सिप्री रिलीजेस दिस रिपोर्ट कॉल्ड ग्लोबल आर्म्स market, right? And about this Stockholm is a capital of Sweden, which is a Scandinavian countries, as we all know, right? Before we read about the findings, let us know about the body itself. So SIPRI is an independent international institute जो कि 1966 में establish हुआ था स्वीडन में, as we have discussed. And इसका main aim और objective क्या है? It is dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament. Now, moving on to the findings of the report. So, the study about the arms says that जो टॉप 25 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल 8.5% इंक्रीज हुई है 2018 के कंपैरिजन में, राइट? एंड यूएस स्टिल होल्ड्स इट्स डोमिनेंस इन दिस फील्ड, इतना ज़्यादा कि 61% ऑफ द कंबाइंड आर्म सेल्स बिलोंग टू यूएस ओनली इवन टुडे, ओके? नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडिया, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है या फिर इंडिया की क्या पोजीशन है इस टॉपिक के बारे में, इस रिगार्ड्स में, we must know that. So talking about India, we are the second largest arms import. Mind you, we are the importers, not the exporters. So we're the second largest importers after Saudi Arabia. So जो सबसे important point है which you should remember कि SIPRI releases this report, right? So next up we have क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक के बारे में कि इस इंडेक्स को कौन डेवलप करता है। सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ जर्मन वॉच, दिस ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट वन इज जर्मन वॉच एंड द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, दैट इज कैन इंटरनेशनल। आपको ये नाम याद होने चाहिए बिकॉज दीज नेम्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन डेवलप करता है, दीज ऑल आर द नेम यू शुड रिमेंबर। अब हम ये देख लेते हैं, द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय असेसिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ 57 कंट्रीज अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन इन 4 कैटेगरीज। वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं, ये कैटेगरीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज GHG ग्रीन हाउस गैस emissions, which accounts for 40%. Renewable energy accounts for 20%. Energy use again 20%, and climate change, climate policy 20% again. ठीक है? Highlights of this index is कि top 3 ranks तो empty ही रही because there was no country that had met the criteria to get placed high enough on the index. Talking about India, India ranked 10th in climate change performance index 2021. लास्ट ईयर हमने 9th पोजीशन अटेन करी थी, दिस ईयर वी आर एट 10th पोजीशन। अगर हम G20 नेशंस के बारे में बात करें तो ओनली 2 G20 नेशंस, वन इज यूके यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, आर अमंग द हाई रैंकर्स इन CCPI 2021 विच कवर्स द ईयर 2020 ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ फाइंडिंग्स है इसके बारे में। So you must, I'm again repeating this, you must remember the name of the organization, name of the developers, name of the index, also the these four categories, और हमारे इंडिया का position. India का position is always important. So that was all about this topic. Next up we have Lakshadweep Organic. तो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया गया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ आफ्टर सिक्किम के बाद अभी इसको 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया गया है। सो द Union Territory's proposal to declare its organic was approved by the center after receiving certifications under पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, PGS स्कीम। PGS स्कीम क्या होती है? PGS स्कीम बेसिकली एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने की एक स्कीम है, ठीक है, थ्रू परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना अगेन इज ऑल्सो टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। Having talked so much about organic farming, now let us know about what is organic farming. So organic farming is defined by the use of fertilizers of organic origin. Mind you, it's organic origin, such as compost manure या फिर green manures. So basically, we don't use any synthetic external inputs here, such as chemical fertilizers या pesticides and all. तो हम ये use नहीं करते. We only use green manures here. That was all about this.
you must remember this name Lakshadweep and Sikkim. तो ये दो ही places हैं जिनको 100% organic declare कर दिया गया. That was all about this topic. Next up we have यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़. ठीक है, तो मध्य प्रदेश टू हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा has been included in the UNESCO World Heritage Site. So this World Heritage Cities is under Urban Landscape City Program. This is a really important program. आपको इसका नाम याद रखना है. Before these two cities also, there were two cities which were included in the list, Ahmedabad and Jaipur. तो अभी 4 हो गए हैं, अहमदाबाद, जयपुर, ग्वालियर एंड ओरछा. ठीक है, ग्वालियर में सबसे फेमस है ग्वालियर फोर्ट. ठीक है, ग्वालियर हैज़ ऑल्सो बीन रूल्ड बाय मेनी रूलर्स लाइक गुर्जर प्रतिहारास, तोमर, सिंधियाज. ठीक है, 15th सेंचुरी में what happened कि 15th सेंचुरी में this city developed a singing school, और जिसमें कहते हैं कि तानसेन ने भी ये स्कूल अटेंड किया था. So this was just an interesting fact. Okay, and then there's an important temple in Gwalior called शास्त्र बहु temple. ठीक है, जिसको हम सास बहू का मंदिर भी कहते हैं. इसका सास बहू से कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ जस्ट द नेम. इट इज़ रादर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. ठीक है, नाउ talking about the next city, Orcha, which was the capital of Bundela Kingdom in 16th to 19th century. It lies on the river Betwa. You must have heard of two rivers, Ken and Betwa. So it lies on the river Betwa. ठीक है. Now let's talk about the UNESCO World Heritage Cities program. So it is one of the 6 thematic programs formally approved and monitored by UNESCO World Heritage Committee. इसका objective क्या है? To assist the state parties in challenge of protecting and managing their urban heritage. Now the major question which arises here कि इसके inclusion से benefits क्या होंगे? Okay, so the obvious advantage, the obvious benefit is that now it will be developed and conserved in a better way by UNESCO, right? So that was all about this particular one. ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है. The name of the cities, the ग्वालियर एंड ओरछा, तो ये आपको याद रखनी है. And also they are located in मध्य प्रदेश, right? That was all about this topic. Next up we have PM Vani. So our government has decided to set up 1 crore data centers to launch massive Wi-Fi networks called PM Vani to bring free public Wi-Fi internet access to all, right? So Union Cabinet has approved a public Wi-Fi access network. Okay, इसका objective क्या है? Its objective is to enable easily accessible public Wi-Fi hotspots spread across the country. ठीक है, ये आप इसके stakeholders के नाम एक बारी पढ़ लीजिएगा. ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? सो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, दिस पैंडमिक हैज़ नेसेसिएटेड डिलीवरी ऑफ स्टेबल एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज. बिकॉज आजकल ऑफकोर्स मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, मैक्सिमम चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट की डेफिनेटली ज़रूरत है. बट आई मस्ट टेल यू अ कैच हियर कि यहाँ पर ये जो फ्री वर्ड का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, सो दिस फ्री वर्ड इज़ एक्चुअली नॉट फ्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सेटअप कोर्स जो आपका लगता है, जो आप घर पे सेटअप करवाते हो, उसका जो कोर्स लगता है, सिर्फ आपको यहाँ पर सेटअप कोर्स नहीं देना, बाकी आप जो भी पब्लिक प्लेस में जाके जो भी 1 GB 2 GB जितना भी डेटा आप यूज़ करोगे, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस फ्री इज़ एक्चुअली नॉट फ्री, राइट? तो ये था इस टॉपिक के बारे में. नेक्स्ट अप वी हैव Asia Pacific Vaccine Access Facility. So recently ADB, that is Asian Development Bank, has launched $9 billion vaccine initiative जिसका नाम है Asia Pacific Vaccine Access Facility. इसका major aim क्या है? Its aim is to provide rapid and equitable support to its developing members ताकि वैक्सीन की इफेक्टिव डिलीवरी हो सके. और अगर इसके अंडर किसी भी कंट्री को फाइनेंस चाहिए तो इट हैज़ टू फुलफिल द 3 क्राइटेरियाज. द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी प्रोक्योर्ड थ्रू कोवैक्स, राइट? It should be pre-qualified by WHO, and the third one is it should be authorized by stringent regulatory authority. Now, what is COVAX? It is an alliance co-led by Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, and WHO. इसका major aim क्या है? Is to accelerate the development and manufacture of
COVID-19 vaccine. So that was major about this topic. Up we have, so next up we have, so but sorry, before I move on to the next topic, यहाँ पर एक चीज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये काफ़ी important topic है for a exam. ठीक है, you must read about Asian Development Bank comprehensively. ठीक है, it's basically a regional development bank. 1966 में इसको establish किया गया था, and it is to promote social and economic development of Asia. So not just the economic development but also the social development of एशिया. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स 2019. द फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हु रिलीजेस दिस. तो WHO हैज़ रिलीज दिस. ठीक है, WHO ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स रिलीज करता है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है. एंड देन ऑफ कोर्स द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस, लेट मी जस्ट क्विकली रीड देम आउट फॉर यू. द फर्स्ट हाईलाइट इज टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ. तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ्स हैं. हार्ट डिजीज़ हो गया आपका, स्ट्रोक हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग कैंसर्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गए. दीज आर द टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ, right? Now let's talk about the another major finding, that is non-communicable diseases. So non-communicable diseases makes up 7% of the I'm really sorry. Non-communicable diseases make up 7 of the world's top 10 causes of death. So that's a really serious cause of concern. ठीक है, हार्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज़ कॉज द मोस्ट डेथ एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 16% ऑफ द टोटल डेथ्स. ओके, अल्जाइमर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़ एंड other forms of dementia are now among the top 10 causes of deaths worldwide. ठीक है, Alzheimer disease होती क्या है? So it is basically a progressive disease that destroys memory and other important mental functions. ठीक है, so it is related to our brain. अगर हम डायबिटीज़ से डेथ्स की बात करें तो it has also increased by 70% globally from 2000 to 2019. And the last one is life expectancy. So it has increased by more than 6 years between 2000 and 2019, from 66.8 years in 2000